Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine by the grace of God. Remember, this is your science book and I am your science teacher, Miss Michelle Michael. So take out your science books with me. Today, we are going to learn something new. Today our science book is going to teach us many more new things. Today we are going to learn about एनिमल्स. आज हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे. टुडे योर साइंस बुक विल टीच यू अबाउट एनिमल्स. सो क्विकली टेक आउट योर साइंस बुक्स विद मी. You have to open page number 12 with me. Page number 12 with me. Here is the name of your topic, the animal world. The animal world. World means दुनिया. So today we are going to learn about animals world. आज हम animals के world के बारे में study करेंगे. Very good. So let's get started. Animals like plants are living things. Animals plants की तरह living things हैं. Living things means जो अपने अंदर ज़िंदगी रखते हैं. जो चीज़ें अपने अंदर ज़िंदगी रखती हैं, जो ज़िंदा होती हैं, जो ज़िंदगी रखती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. ओके, वी कॉल देम लिविंग थिंग्स. वेरी गुड. सो एनिमल्स, प्लांट्स एंड वी आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स. वी ऑल आर living things. Very good. Next. Living things need food and water. What they need? They need food and water. Very good. They grow, breathe, speak, move and reproduce. Living things need food and water. Very good. They grow, वो बढ़ते हैं. They breathe, वो सांस लेते हैं. They speak, वो बात करते हैं. Like I am talking to you, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ. They move from one place to another place. वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं. They can move. And they reproduce also. वो बढ़ते हैं. Okay? Reproduce means पैदा करना. Reproduce means पैदा करना. जैसे birds, baby birds को पैदा करते हैं. Baby birds को reproduce करते हैं. Okay? Very good. Non-living things cannot do these things. Oh, today we have learned two new words. Living things and non-living things. Living things and non-living things. We have studied about living things that they can breathe, they need food, they need water, they can move, they can talk and they can reproduce. Yes. So living things ये सब चीज़ें कर सकती हैं. Now we will talk about non-living things जो अपने अंदर ज़िंदगी नहीं रखती. ओके, लिविंग थिंग्स मीन्स जो अपने अंदर ज़िंदगी रखती हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो अपने अंदर ज़िंदगी नहीं रखते. ओके, और वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते. नाउ आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. We have learned about living things that they can move, they can eat food, they can drink water, they can breathe, they can talk and they can move and they can reproduce. But non-living things cannot do these things. Now you can see this is a table. What is this? This is a table. आप सबके घर पे टेबल है. ये टेबल non-living thing है. Okay? This table cannot eat food, right? This table cannot drink water, okay? This table cannot talk. ये बात भी नहीं कर सकता and ये सांस भी नहीं ले सकता. So this is a non-living thing. Very good. Now you can see this is a chair. What is this? This is a chair. This chair is also a
non-living things, non-living thing, because it cannot move, it cannot eat food, it cannot drink water, right? And it cannot talk. So this table and chair, we can say these things are non-living things. Very good, class. Now get back to your book with me. There are many different types of animals in the world. Many different types. बहुत तरह के animals हैं इस world में. Different type means बहुत सारी किस्म के animals हैं. Okay? They have different shapes, colors and sizes. अब इस वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स हैं. दे हैव डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट साइजेस ऑल्सो. सब एनिमल्स एक शेप के तो नहीं हैं. नो, दे हैव डिफरेंट कलर्स. यस, दे हैव डिफरेंट कलर्स एंड दे हैव डिफरेंट साइजेस ऑल्सो. सम लिव ऑन लैंड. लैंड मीन्स ज़मीन. लैंड मीन्स ज़मीन, जो ज़मीन पर रहते हैं. सम इन वाटर. सम एनिमल्स लिव इन वाटर. कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं. एंड सम स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ज़्यादातर वक्त अपना कहाँ गुजारते हैं? एयर में. You know, birds, they can fly. Okay? Very good. Now, here is the new topic. Like, here is a new heading for you. Animals on land. Animals on land. Today we will learn about animals which lives on lands. हम उन animals के बारे में बात करेंगे जो ज़मीन पर रहते हैं. Land means ज़मीन. Very good. Here is a dog. Dogs live on land. Dogs कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं. Horses live on land. Horses भी ज़मीन पर रहते हैं. Humans and many other animals live on land. Human, हम भी और जानवर भी कहाँ रहते हैं? ज़मीन में रहते हैं. Human beings पानी में तो नहीं रहते. नो. क्या ह्यूमन बींग्स फ्लाई कर सकते हैं? दे लिव इन एयर? नो. वी ह्यूमन बींग्स वी लिव ऑन लैंड. ओके, सो सम एनिमल्स ऑल्सो लिव ऑन लैंड. वेरी गुड. लैंड एनिमल्स हैव बॉडीज दैट हेल्प देम टू लिव ऑन लैंड. लैंड एनिमल्स की बॉडीज होती हैं, जिस्म ऐसे होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं कहाँ रहने में? लैंड पे रहने में, ज़मीन पर रहने में. ओके, यू रिमेंबर योर फर्स्ट चैप्टर, द ह्यूमन बॉडी. इन दैट चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट बॉडी एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो एनिमल्स के पास बॉडीज़ होती हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं लैंड में रहने के लिए. Most land animals have legs to help them move on land. Most land animals, they have legs. Legs means टांगे. Most living land animals have legs to move on land. उनके पास टांगे होती हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें. Very good. Most land animals have hair or fur to keep them warm when it gets cold on land. You can see this bear. Most land animals have hair. आपको देख रहे हैं कि यहाँ इनकी स्किन पर, इस बेयर की स्किन पर बाल हैं और फर है, राइट? Hair or fur to keep them warm. इन्हें गर्म रखने के लिए. कब? जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है. ओके, सो these hair and
Fur help them to keep themselves warm. Very good. So today we have learned about many more new things. First of all, we have learned about the animal world. Second, we have learned about difference between living things and non-living things. Very good. We have learned that animals have different shapes, sizes and colors. Today we have learned about animals which lives on land. Very good. Now we will do some copy work now. You have to open your copy with me. First of all, you have to draw a margin line like this. Very good. Then you have to put date and day. Your date is 26th April 2021. Very good. And today is Monday. This is your 4th lecture. Very good. Then you will write topic, and the name of the topic is the animal world. The animal world. Very good. Here you will write answer the following questions. Answer the following questions. Very good. Here is your question number 1. Here is your question number 1. Name some land living animals. Wow, we have learned about land living animals, right? So here are 3 names for you. You will write answer like this, and your number 1 animal name is lion. Number 2, dog. Number 3, horse. Lion, Lion. Lion. Dog, Dog. Dog. Horse, Hor. Horse. Okay. So this is your